बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन टू नोआ सक्सेस सीरीज 2020। कहते हैं कि कुछ चीज़ें आप चाह सकते हैं लेकिन उन्हें कभी पा नहीं सकते। दुरुस्त में सफ़र, मंजिल के हसूल की लगन, दुआओं की कबूलियत का यकीन और ख़ुद पर एतबार करके इंसान जो चाहता है वो पा भी लेता है। मुकाबले के इम्तिहान में ख्वाब और कोशिश आपकी, लेकिन खुशी में सब शरीक होते हैं। चंद ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें इस इम्तिहान के लिए तैयार करते हैं और अपने लिए एक कामयाब ज़िंदगी की तश्कील देते हैं। अपने लिए एक कामयाब ज़िंदगी की तश्कील देने वाली CSS 2020 की नोआ स्टार हरीम फातिमा आज हमारे साथ मौजूद हैं। कानून की डिग्री रखने वाली हरीम फातिमा की एलोकेशन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में हुई है। आए आज उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरीम। वालेकुम अस्सलाम। हरीम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। हरीम, first of all, I would really like to ask you that you have done degree in law. Yes. तो ये law से switch करके civil service पर आप क्यों आई? फरा, जब मेरी graduation हुई थी 2019 में, तो I had gotten 2 distinctions and I had scored one of the highest scores in Pakistan. तो घर पे सब congratulations बोलने आ रहे थे। So one of our family friends, Uncle Saeed, he came over and he said, why don't you appear for CSS now that you are done with your studies and all? I said, but I don't want to work for anybody. I'm going to be my own boss. He said, but what do you aspire to do? I said, I want to help the people of Pakistan ultimately. He said, you are going to be doing that if you go for the civil services. And on top of it, we don't even know if you're intelligent enough to pass it and to clear it. So it was basically him who suggested that I go for it. Okay. Yeah. So Hareem, you have been allocated in Inland Revenue Service. Yes. So did you see it coming or was it like an unexpected result? I'd say it was an unexpected result considering Punjab ka domicile hota hai, itne zyada students prepare ho rahe hote hain. Competition is pretty much neck to neck. Yeah. So yeah, I'm grateful and I'm humbled, alhamdulillah. MashaAllah. So Hareem, let's talk about the written examination first. So in written examination, the toughest subject is of English essay. तो English essay की तैयारी में there are different strategies of doing English essay. 1000 तरह से लोग ऐसे बताते हैं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो. Still English essay is a subject जो कि सबसे ज़्यादा CSS में फेल होता है. बिल्कुल. तो what was your strategy of clearing English essay? How did you prepare for it? Did you write a lot of essays? या फिर ये है कि बस छक्का लगे? मैंने जनवरी में आके एसए की तैयारी शुरू की थी, शुरू से नहीं शुरू किया था। एंड डॉक्टर आरिफ इज़ अ टीचर हियर एट नोआ, और मुझे उनके जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बताई वो मुझे समझ आई। उससे पहले मुझे किसी टीचर की समझ नहीं आई थी। तो आई थिंक डॉक्टर आरिफ, आई वाज लकी कि डॉक्टर आरिफ आ गए और उन्होंने जो बताया वो मुझे समझ आया। फिर मैंने उन्हीं को कुछ एसेज, एक आध ऐसे चेक कराया और उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल, एंड ही टोल्ड मी व्हाट आर द problems. And then I wrote 2 more essays. I got them photocopied. I got them checked from Dr. Arif, Sir Fareed, and any other teacher that I could find here. और जितनी feedback आई, it was all good. And then I knew that I'm safe to go for CSS. So like, did you write a lot of essays? I wrote like complete essays. अगर मैंने लिखे तो 5 लिखे होंगे, लेकिन otherwise I did outlines. Outlines. Yeah. Okay. So Hareem, essay के बाद there is one subject which is English, Pressy and Composition. तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो failure ratio है ना वो बहुत ज़्यादा है. जी. तो Pressy के लिए what was your strategy? Because there are different questions in English Pressy. It's not just the Pressy and the comprehension. लेकिन उसके अलावा there is grammar, उसमें pair of words, translation. There are a lot of things. और Pressy में जो ऑब्जेक्टिव आता है वो भी काफ़ी मुश्किल आता है. तो आपने किस तरह तैयारी की थी? Did you prepare for the objective as well or not? I did not. I'll be very honest. I did not. I prepared for the Pressy. Okay. I prepared for the translation because translation is also pretty difficult. Yes. I didn't do a lot of I didn't do a lot of grammar as such, but I did give time to Pressy. Okay, so did you attempt past papers Pressys or did you just randomly? Past paper Pressys. Past paper Pressys, yeah. Okay, good. So Hareem, after English, Pressy and Composition, there is this subject which is like a very, very, very vast subject, which is current affairs. So current affairs is like कि आपको बहुत डिटेल में बहुत कुछ पता होना चाहिए और साथ में बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स की तैयारी जो है दैट वो तो पेपर के एक दिन पहले तक चलती रहती है, बिकॉज यू नीड टू नो एवरीथिंग, जो भी नई नई अपडेट्स आ रही हैं। तो आपने करंट अफेयर्स के लिए क्या किया था? डिड यू मेक 1-pager नोट्स और डिड यू मेक डिटेल नोट्स?
आपने sources क्या इस्तेमाल किए थे, थोड़ा सा उस बारे में बता दीजिए. Sources, to be very honest, my primary source was Sir Fareed. Okay. And then I aided Sir Fareed's notes with the newspaper and with certain books that I could find on geopolitics. So did you make notes of? Yes. I write a lot. Like when a teacher is speaking, you will not find me sitting like this. I'm just jotting down everything that is coming out of the mouth of teacher. So I used to write everything that Sir Fareed used to say, that Sir Ali used to say. Any teacher here at NOA, all the classes that I've attended, I've made detailed notes of every subject. So how did you prepare those detailed notes? Like how did you revise those notes in your exam? I made one-pager notes. I turned them into one-pager notes. When I was preparing, so I would, write down important headings or write down one line that would remind me of the whole scenario or the situation that was happening around that time. Okay, nice. So Hareem, you had political science. Normally it is said that political science is comparatively more scoring than international relations. So did you have this thing in mind while opting for political science, or was it because you had a background of law and you were thinking that probably your background will help you in political science more? I think the reason I went with political science was my background. Okay. Because I understood the government structure. Those things were easy for me to grasp and easy for me to imbibe in. That's why I opted for political science. वो तो फिर अच्छा हुआ कि उसमें marks भी अच्छे आते हैं. That was a bonus, an add-on. Okay. So did you, what sort of books did you consult for political science, and how did you make notes of it? For Pakistan's government structure, I used Hamid Khan's Constitutional and Political History of Pakistan. And for the other systems, I used Hilia Barnett's book for UK system, and I used Alan Brinkley's book for USS system. Those are the three major books that I used. उसके अलावा जो philosophers करने थे, Muslim philosophers के इतना कुछ material या एक book नहीं मिलती, तो I used online internet resources for that. For Western philosophers, I used Jude Harmon's book. So it wasn't just one book; it was quite a lot of book in a mix and match of a lot of them. So Hareem, you just mentioned कि आपने political science के लिए ये 3-4 किताबें पढ़ी थी. तो is it like for every subject के हर subject के लिए बहुत ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ती हैं, या सिर्फ वो particular कुछ subjects हैं जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा किताबों की ज़रूरत होती है? I believe कि ठीक है हमें बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, पर आपने एक बुक को पूरा शुरू से लेकर आखिर तक नहीं पढ़ना. हर बुक से कुछ टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं, और फिर अगर आप बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करें तो कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं. सारे टॉपिक्स हर साल नहीं आते. तो लुक एट द पास्ट पेपर्स, लुक एट द क्वेश्चन पैटर्न, लुक एट द ट्रेंड दैट इज़ गोइंग ऑन, और फिर सिलेक्टिव स्टडी करें. अगर टाइम कम है, अगर ज़्यादा है तो फिर ज़ाहिर बात है सारी कर लें, लेकिन हर बुक से कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स होते हैं जो मैंने प्रिपेयर किए थे. पूरा बुक नहीं पढ़ी थी, तो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके. सो पॉलिटिकल साइंस के लिए आपने अभी बताया कि आपने 3-4 किताबें पढ़ी थी, तो उसके अलावा अगर हम बात करें, आई बिलीव यू हैड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज वेल. तो क्या पॉलिटिकल साइंस की तैयारी से आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तैयारी कंप्लीट हो गई थी, या उसके लिए आपको अलग तैयारी करनी पड़ी थी? हो गई थी. It was 100% overlap, and since I have a law background, तो मुझे उसके अंदर आर्टिकल्स ऐड करने में, केस लॉ ऐड करने में इतनी मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पेपर में आपने केस लॉ से उसको सप्लीमेंट करना है अपने आंसर को. आपने आर्टिकल, सेक्शंस, एक्ट्स के नाम लिखने हैं. तो that was easily done. That was ठीक हो गया. So Hareem, you had gender studies as well, and gender is one subject in CSS which is very unpredictable. Like in one year it gives very very good score, the other year it gives very less score. So what was your strategy of studying gender studies? And I believe you scored good in gender studies as well. So how did you prepare it? For gender studies, I used online sources, because there is no one particular book that has all the CSS syllabus in one book. So, and also in law, there is this very vast field that we study. It's called feminist legal jurisprudence. और फिर उसने मुझे काफ़ी aid किया था to put or add stuff in gender studies. So, for gender studies, it was online sources, no book. Oh, okay. Yeah. So Hareem, अगर देखा जाए तो normally a lot of people aspire to become a civil servant because in their family there is someone जिसको देख के वो inspire हुए होते हैं कि हमने बनना है इस जैसा. So did you have someone in your family already who were a civil servant? नहीं, there is nobody even my extended family, there is nobody who is a civil servant. So you're the first one? Yeah, alhamdulillah. Mashallah. So Hareem, you seem a very humble person to me. So
I wanted to ask that, was there a lot of people around you who helped you and motivated you during this journey, or you were like standing alone, studying hard? Like, what was the scenario? Yeah, I think this would also be my advice to everybody. I didn't tell anybody that I was doing CSS. Okay. Nobody in my family knew. Nobody in my friend circle knew. Literally 2 or 3 friends knew, and my mother and my brothers were the only people who knew that I'm doing CSS. So that made it a lot easier for me as well, because there was no added pressure that I have to excel or I have to meet some standard. Yeah. That's why it was easier, because there was no added pressure on me. So it was me and my family and 2 or 3 friends. That's it. So did your friends and family, did they keep on motivating you कि तुम कर सकती हो, कर सकती हो, कर सकती हो? Yes, there were a lot of breaking points. And CSS is a journey that's very long, and it's very frustrating as well. So you need a lot of good people who are motivating you. Yeah. And I'd say I wouldn't have been able to do it if it wasn't for my mother. She was constantly bringing me food and bringing me stuff. And friends भी जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ के थक जाते हैं तो friends को एक call करते हैं. You can hang out with a friend. Yeah. You can go for a run or for a walk. तो मैंने यही स्ट्रैटेजी रखी थी कि अपना एक क्लोज सर्कल था, उनको पता था और वही हेल्प आउट कर देते थे. अगर मैं बहुत ज़्यादा 4-5 दिन कॉन्स्टेंटली पढ़ने के बाद थक गई हूँ तो they would come to my aid and they would help me or hang out with me. So yeah, they did help a lot. So Hareem, you think that in CSS, emotional support is very important? Yes. Because there are days when you are very frustrated, as you have just mentioned. So what is one thing other than the support that you think is crucial for clearing CSS and crucial for that time period, which is very tiresome? I'll tell you what I did. So you must have something other than the studies bit. I run a lot. So whenever I would get tired from studying a lot or just long sessions of studying, I would go out for a run or a walk alone, sometimes with my mother, sometimes with a friend. So I think keeping one thing with you, if you like to paint, if you like to read books, but किसी का दिल नहीं कर रहा होता इतनी पढ़ाई के बाद दोबारा book पढ़ने का, so you can just do any extracurricular activity that will help you to regain that mental calmness that you need. So Hareem, during this whole time, some people follow a proper set of routine कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, कि मैंने ये subject भी पढ़ना है, फिर मैंने ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है. तो did you also make a timetable कि मैंने इस time पे follow करना है, like time के हिसाब से आपने subjects के हिसाब से बनाया हुआ था अपना timetable, और were you just preparing randomly कि चलो आज ये पढ़ लेते हैं, कल वो पढ़ लेंगे? मैंने तैयारी शुरू की थी, like I joined NOA in September 2019. तो मेरे पास पहले ही बहुत कम टाइम था और मैंने नवंबर में जाकर सही तरीके से पढ़ना शुरू किया था. आई वुडंट से कि मैंने एक टाइम सेट किया हुआ था कि मैंने एक दिन में 8 घंटे पढ़ना या 10 घंटे, मैंने इस तरह का कुछ नहीं किया था, पर मैंने टॉपिक्स कर लिए थे दैट आई वांट टू डू US का पोर्शन इन 1 वीक. तो फिर one day I would study 8 hours, the other day I would study 4 hours. तो it just I went topic wise. Yeah. Like you have just mentioned that you have studied 8 hours for a day and then 4 hours the next day. So have you studied for 15, 16, 18 hours continuously for a day? Not at all. That's not possible. For me, it wasn't possible at least. 15 hours is just too much. Yeah, I can totally relate. So Hareem, what was your revision strategy? Since you just mentioned that you have actually started preparing in November, which is like 3 months. 4 months. Yeah, 3-4 months before exam. So, did you have time to revise, or you just sat in the exam without revision? No, I did my revision starting from the last week of January. Okay. And as I told you that I was very exam specific. I looked at the past papers, I saw which questions are coming, which topics are repeating over and over again, and I did those topics. और फिर कुछ पेपर्स के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स कर लेते हैं ताकि अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा एग्ज़ाम आ जाए तो आपके पास कुछ हो अप योर स्लीव टू राइट. तो मैंने क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी की थी इसलिए मेरा सिलेबस हो गया था कवर. बट आई वुड से इफ़ यू हैव टाइम तो ऑब्वियसली डू गिव इट टाइम एंड because in the end it's going to be worth it. So Hareem, in CSS preparation normally students read a lot from a lot of different sources. लेकिन मसला ये आता है कि वो अपनी written practice इतनी ज़्यादा नहीं करते. तो आपके नज़दीक written practice CSS में कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है
क्योंकि आपने एक दिन में 2 एग्ज़ाम्स देने हैं. सुबह भी आपका एग्ज़ाम है, उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक है, देन यू हैव टू सिट फॉर अनदर एग्ज़ाम. तो जब तक आपकी रिटन प्रैक्टिस नहीं हुई हुई, आपके हाथ से कोई चीज़ नहीं गुजरी हुई, तो आप एग्ज़ाम में थक जाएंगे, एक प्रेशर होगा आपके ऊपर, तो यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म वेल. मोर ओवर, जब मैं बहुत छोटी थी तो वन ऑफ माई टीचर्स टोल्ड मी कि हमारे हाथों में आर मसल्स हैव मेमोरी, एंड व्हेन वी राइट समथिंग और व्हेन वी डू समथिंग, हमारे हाथों को याद रहती है वो चीज़. तो एंड दैट हैपन्स विद पेंटिंग और डूइंग नीडल वर्क एज वेल. इफ़ यू पिक अप नीडल्स आफ्टर 5 years, your hands are going to remember the movement, and if you're writing quite a lot, you are going to remember stuff. आपके हाथ लिख रहे होंगे पर आप बेशक सोच ना रहे हो, पर आपके हाथ लिख रहे होंगे, because you've done the written practice yourself. In your point of view, आपको क्या लगता है कि CSS की तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? Because there are a lot of factors that actually play part. आपकी writing skills, आपने कितना अच्छा पढ़ा हुआ है, कितने अच्छे sources से पढ़ा हुआ है. There are multiple sources, but there has to be one source or one thing which is actually the deal breaker for CSS. What is that thing according to you? I would say consistency. क्योंकि there would be days जब आपका नहीं दिल करा पढ़ने का, लेकिन अगर आपने अपने उस दिन के लिए एक टॉपिक डिसाइड किया हुआ है तो आपको वो करना चाहिए. अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, परसिवेरेंस है, तो यू कैन डू इट. बस एम बना लें अपना एंड देन गो फॉर इट. So Hareem, there are a lot of incidents that actually happened during this CSS preparation because I have been through this phase. Yeah. और इसमें तैयारी करके और जब आप साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंटरव्यू होता है, तो वो काफ़ी मज़े का टाइम भी होता है इन अ वे. तो आपकी इस पूरी तैयारी में फ्रॉम योर रिटन प्रिपरेशन टू योर इंटरव्यू कोई ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ हो जो आप बताना चाह रही हैं? मैं अपने इंटरव्यू का एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ. उस वक्त वो बिल्कुल फ़नी या इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था. इट्स ओनली व्हेन वी लुक बैक एट इट जब हमें वो थोड़ा अच्छा लगता है. So during my interview, when all of the panelists asked me their questions and I was about to leave, one of the panelists go like, Hareem, you've changed. And out of nowhere this question comes that you've changed. And I was like, sir, what do you mean? And he said, can you stand up and tell me if this picture is your picture in the forms? And I was like, oh my God. And then I was like, yes, sure sir, I can stand up. And I stood up and I went to the table and I said, of course it was going to be me, they were my forms. And I said, yes sir, it's me. He said, you've changed a lot. And I said, sir, are you talking about the glasses? Because I used to wear quite heavy glasses and I had just gotten the LASIK surgery done. And I said, sir, are you talking about the glasses? He said, no, you've changed. I said, are you talking about the haircut? He said, no, you've changed. And I was like, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ. And then I said, okay sir. और मैं जैसे ही बैठने लगी अपनी सीट पर दोबारा, he said, you may leave now. इतना abruptly मेरा इंटरव्यू इस तरीके से एंड हुआ और मुझे उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं उठूँ और मैं जाऊँ. And he looked at me and he said, you can leave now. All the best of luck for your future. अब मैं बाहर आई and I called Sir Fareed and I said, मेरे साथ ये हुआ. He said, बहुत अच्छा इंटरव्यू हो गया. I said, नहीं पर ये थोड़ा अजीब है. But he said, नहीं, it's good. और फिर मार्क्स आए अल्हम्दुलिल्लाह, तो I'm happy. Yeah. Okay, very nice. So Hareem, you belong from Punjab and there are a lot of CSS aspirants for Punjab. जी. And they might be watching you. जी. So any message जो आप पंजाब के लोगों को देना चाहें बिलखसूस और पाकिस्तान के CSS एस्पिरेंट्स को देना चाहें, वो क्या मैसेज देना चाहेंगे? टू द स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब, आप अपना 100% दें CSS को. आप नहीं अफोर्ड कर सकते 100% से थोड़ा सा भी कम देना, क्योंकि वी हैव सीन सच एक्सीलेंट स्टूडेंट्स नॉट गेट एनी एलोकेशन एट ऑल. तो इतना क्योंकि कंपटीशन टफ होता है, इतने अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, तो आई वुड से इफ़ यू जम्प्ड इनटू द रिवर, नो हाउ टू स्विम, और फिर आप आएँ और फिर आपको खुशी भी होगी, आपके वालिदैन को भी खुशी होगी, पर अपने आपने 100% देनी है. That would be my message to the students of Punjab. Thank you so much, Hareem. Thank you for taking your time out. अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे और अल्लाह ताला आपकी हुर्मत हमेशा सलामत रखे. Thank you so much. Thank That's you so wonderful. much. Thank and you. congratulations again. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much everyone. हमारे साथ मौजूद थी हरीम फातिमा, जिनका ताल्लुक पंजाब से है और उनकी एलोकेशन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में हुई है. हरीम ने बहुत ही कैंडिड तरीके से अपनी जर्नी हमें बताई और बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स भी सुनाए. हम आएंगे दोबारा से एक नई कहानी लेकर, एक नई कामयाबी की दास्तान लेकर. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह.